Hello students, in today's session I give overview of syllabus. I did not explain on PPT in online session due to network problem. Okay, so in today's session I will explain. So our topic is introduction. There are 5 chapters in syllabus and total credit is 3. Prerequisite means if you are learning this subject, you have to knowledge about sensors and transducers. So fundamental knowledge of sensors and transducers. In our mind, first question is what is environment, right? And simple answer is environment, that means surround us. Okay, so it's a definition. And envar word come from French word. Okay, so that term the term environment comes from the French word environ and means everything surround us. Next question, what is basic instrumentation? Our subject is environmental instrumentation. So we know about environment. So now we have to know about what is instrumentation. Simple instrumentation means we are measuring and controlling any instrument, and we also measuring process variables like temperature, level, flow. So this process is done by instrumentation engineer. Okay, so now see definition of what is basic instrumentation. Instrumentation is the science of automated measurement and control in industry. When we measure and control any automated device, right? And who who done instrumentation engineer do this type of work. Instruments in second line, instruments are used to measure and control the condition of process streams as they pass through a plant. In third line, in next line, instruments are used to measure and control process variables. Process variables such as temperature, flow, level, pressure, quality, right? In chapter 1, first we discuss about types of pollutions. Next, necessity of instrumentation and control for environment. मतलब जरूरत क्यों पड़ी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर को एनवायरनमेंट के बारे में सीखने की, राइट? नेक्स्ट, व्हाट इज सेंसर, व्हाट इज ट्रांसड्यूसर, व्हाट इज ट्रांसमीटर, सेंसर रिक्वायरमेंट फॉर एनवायरनमेंट. आप these questions we will learn in first chapter, and first chapter is introduction chapter, right? Chapter 2. In chapter 2,
Its title is Quality of Water. In chapter 2, we will learn about how to measure quality of water, right? And which parameters are affected. So, first, water quality refers to chemical, physical and biological characteristic of water. मतलब कि अगर पानी है तो पानी में केमिकल है मतलब H2O, फिजिकल मतलब वो कैसा लगता है पानी, मतलब वो ट्रांसपेरेंट दिखता है, राइट? बायोलॉजिकल मतलब उसके अंदर कोई कचरा या कुछ जम्स नहीं होने चाहिए, राइट? तो वो सब कैरेक्टरिस्टिक हम जब वाटर की क्वालिटी चेक करते हैं तब ये सारे पैरामीटर्स हम चेक करते हैं. Another general perception water quality is that of a simple property that tells whether water is polluted or not. Perception that means in Gujarati drishti, right? And in Hindi अनुभूति. ओके, मतलब दूसरी साइड हम देखने जाए तो जो रे रेन से मतलब जो बारिश का पानी है वो सब हम क्वालिटी उसकी चेक करते हैं. क्यों चेक करते हैं कि भाई पॉल्यूटेड है या नहीं है, राइट? तो ये सब चीज भी हम ध्यान रखते हैं. थर्ड पॉइंट, द मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड्स used to assess water quality relate to health of ecosystem, safety of human health and drinking water. मतलब पानी जो है वो इंडस्ट्री में भी यूज होता है, हम पानी पीने के लिए भी यूज करते हैं, राइट? सो ये सब एप्लीकेशन के लिए हम वाटर यूज करते हैं तो उसकी क्वालिटी भी हमें चेक करनी चाहिए, राइट? उसके स्टैंडर्ड्स भी चेक करनी चाहिए. तो ये चैप्टर में हम उसके स्टैंडर्ड्स क्या है, राइट, कैसे मेजर कर सकते हैं वाटर की क्वालिटी, वो सब हम ये चैप्टर में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर 3 सेडिमेंटेशन एंड फ्लोटेशन. What is sedimentation? The process of particles settling to the bottom of a body of water is called sedimentation. Next question, what is flotation? Flotation that means कुछ चीज टॉप पे रहती है, पानी के टॉप पे रहती है तो उसको फ्लोटेशन बोलते हैं. और कुछ चीज पानी के नीचे बॉटम में चली जाती है उसको सेडिमेंटेशन बोलेंगे. तो ये चैप्टर में हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस देखेंगे कि कैसे वर्क करती है. ओके, सो हमने डेफिनेशन तो देख ली, सेडिमेंटेशन किसको बोलते हैं. नेक्स्ट, फ्लोटेशन किसको बोलते हैं देखते हैं. फ्लोटेशन इज, सी इन डेफिनेशन, flotation is a term used in science to describe when something is suspended at the top of a liquid like a wooden canoe on water. Wooden canoe that means boat, जो बोट होती है, राइट? अगर उसका कुछ पार्ट्स टूट गया है तो वो पानी में से तरता रहता है, राइट? तो जो भी चीज जो जिसका वेट कम होगा वो पानी पे टॉप पे होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन बोलते हैं. चैप्टर 4 एयर पॉल्यूशन, राइट? फर्स्ट we are I give definition what is pollution, then after I give definition of air pollution. Okay, so first we have to know about what is
Pollution. Pollution is the introduction of harmful material into the environment. मतलब कोई भी harmful चीज है, कोई मटेरियल है, वो एनवायरमेंट के साथ मिक्स होती है, तो उसके कारण पॉल्यूशन क्रिएट होता है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट, द हार्मफुल मटेरियल्स are called pollutants. Pollutants can be natural, such as volcanic ash. Volcanic ash, that means ज्वालामुखी की जो राख होती है उसको हम बोलते हैं volcanic ash, और वो नेचुरल होता है, राइट. सो ये सब अगर ज्वालामुखी की जो राख है तो वो एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स होती है तो पॉल्यूशन ऑब्वियसली क्रिएट होगा. ओके. नेक्स्ट, दे कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके कारण भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है, सच एज ट्रेस, दैट मीन्स कचरा, गार्बेज, ट्रेस और रन ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय factories. Pollutants damage the quality of air, water and land. ओके. तो इफेक्ट किसके ऊपर आता है पॉल्यूशन के कारण? एयर है, वाटर है, लैंड है, उसके ऊपर इफेक्ट होती है. ओके. तो ये ये जो चैप्टर है फर्स्ट हमने सीखा व्हाट इज पॉल्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट हम सीखेंगे व्हाट इज एयर पॉल्यूशन. Air pollution is a type of, see in definition, type of environmental pollution that affects the air and is usually caused by smoke or other harmful gases, mainly oxides of carbon, sulfur and nitrogen. एनवायरमेंटल एयर पॉल्यूशन वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का ही एक टाइप है. स्मोक के कारण गैसेस क्रिएट होते हैं, राइट. वो गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, राइट. वो सब गैसेस क्रिएट होते हैं और इसको हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन. नेक्स्ट, चैप्टर 5, एयर मॉनिटरिंग. एयर मॉनिटरिंग चैप्टर में जो पॉल्यूशन के कारण जो हमने गैस डिटेक्ट किए हैं तो उसका मॉनिटरिंग, रिकॉर्डिंग, राइट, कैसे करते हैं, तो ये हम चैप्टर 5 में सीखेंगे. व्हाट इज एयर मॉनिटरिंग? रेगुलर चेकिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एयर क्वालिटी in a given area. The following pollutants must be considered: carbon monoxide, benzene, lead, sulfur dioxide, nitrogen dioxide and particles were. So in chapter 5 we will check and monitor and record um, gases which was produced in atmosphere, right. So this is our syllabus of environmental instrumentation. I have a posted PDF of book, and book's author is Randy D. Down. Book's language is very tough. I give you my notes, so I think you can refer it. In my notes, language is very simple. Okay, so book keep with you as a reference. Okay, I am not telling you ignore book.
you can use book as a reference. Okay, and prepare separate notebook of this subject. Thank you. If you have any doubt, you can ask me.